Dear students, I am Dr.Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. Today I will deliver lecture on triple integral for the students of BA, BSc 6th Sem, third year. On mathematics paper third, mathematics paper first, real and complex analysis. Triple integral, let B be a region of the three-dimensional space. Let B be a region of the three-dimensional space. Consider the function fx by z of the independent variable x by z defined at every point in V. Divide the region V into n elementary volumes. Let V be a region of the three-dimensional space. Consider the function fx by z at the of the independent variables x, y, z defined at every point in V. Divide the region V into n elementary volumes, delta V1, delta V2, delta Vn. Let xr, yr, zr be any point inside the rth subdivision delta Vr. Consider the sum summation r equal to 1 to n fxr, yr, zr delta Vr. क्या कह रहा है? तो एक रीजन V है, ठीक, थ्री डायमेंशनल स्पेस में है. कंसिडर द फंक्शन fx by z ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y, z डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन V के उस रीजन पे डिफाइंड है. इस V रीजन को डिवाइड कर दो इनटू n एलिमेंट्री वॉल्यूम्स. डिवाइड करना डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा Vn. लेट xr, yr, zr be any point inside the rth subdivision delta Vr. लेट कहता है xr, br, xr, yr, zr be any point inside the rth subdivision delta Vr. Consider the sum summation r equal to 1 to n f xr, yr, zr delta Vr. When n approached infinity and the dimensions of each subdivision tend to 0, then the limit of the above sum is called triple integral. So then the limit of the above sum is called triple integral of fxyz over the region V and is denoted by triple integral over volume fxyz dv. As in the case of double integral, the triple integral is also evaluated by reducing it to a repeated integral in which three successive integrations are performed. Let B be a region of the three-dimensional space
वी क्या है, रीजन है, लेट वी बी ए रीजन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस, ट्रिपल इंटीग्रल, लेट बी बी ए रीजन ऑफ द थ्री डायमेंशनल स्पेस, consider the function fx by z of the independent variables, take x y z defined at every point in V, divide the region V into elementary volumes delta V1, delta V2, delta Vn, let x r, y r, z r be any point inside the rth subdivision delta Vr. Consider the summation r running from 1 to infinity f x r, y r, z r delta Vr when n approach to infinity, and the dimensions of each subdivision tend to 0. Be any point inside the rth subdivision delta Vr. Consider the summation r equal to 1 to n f x r, y r, z r delta Vr when n approach to infinity, and the dimension of each subdivision tend to 0. ठीक, then the limit of the above sum is called triple integral of fx by z over the region V, and is denoted by triple integral of volume fx by z dv. As in the case of double integral, the triple integral is also evaluated by reducing it to a repeated integral in which three successive integrations are performed. The summation r equal to 1 to n f x r, y r, z r delta Vr when n approach to infinity, and the dimensions of each subdivision tend to 0. Then the limit of the above sum is called triple integral of fx by z over the region B, and is denoted by triple integral over V fx by z dv. As in the case of double integral, the triple integral is also evaluated by reducing it to a repeated integral in which three successive integrations are performed. पता नहीं किधर जा रहा तेरा दिमाग, बहुत इतना ही जी। अरे ट्रिपल क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल छोटे वॉल्यूम में तोड़ लिया, ठीक, और उस एक्स आर बी आर के अंदर एक पॉइंट ले लिया एक्स आर, वाई आर, जेड आर, ठीक, इनसाइड दी आर सब डिवीजन। कंसीडर, अब ये सम कंसीडर कर लो, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, n टुकड़े किए हैं इसलिए इनकी गुणा कर लिए, एक्स आर, वाई आर, जेड आर डेल्टा वी आर, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब जो ये टुकड़े किए थे ना, इनको इन्फिनिटी छोटे बना दो और पॉइंट बना दिए, पॉइंट, एंड द डायमेंशंस ऑफ ईच सब डिवीज़न टेंड टू 0, एक्स वाई जेड टेंड टू 0 करा दिए, एक्स आर, वाई आर, जेड आर है, ठीक। देन द लिमिट ऑफ द अबव सम, ये जो सम आया ना इसकी लिमिट लेते हैं, इज कॉल्ड ट्रिपल इंटीग्रल निकल के आएगी ऑफ एफ एक्स बाई जेड ओवर द रीजन वी, एंड इज डिनोटेड बाई ट्रिपल इंटीग्रल वी एफ एक्स बाई जेड डी वी। एज इन द केस ऑफ डबल इंटीग्रल, ये तो ट्रिपल इंटीग्रल कितनी बार करेंगे, वेक्टर कैलकुलस में कर लिया, इंटीग्रल कैलकुलस में कर लिया, अब दोबारा कर रहे हैं, तो ये तो बार बार आ रहा है।
As in the case of double integral, the triple integral is also evaluated by reducing it to a repeated इंटीग्रल. जैसे डबल इंटीग्रल में थे, डबल इंटीग्रल को रिपीटेड इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया. ये ट्रिपल इंटीग्रल है, इसको रिपीटेड इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो, इन विच 3 सक्सेसिव इंटीग्रेशंस आर परफॉर्म्ड. ठीक. The triple integrals are essentially the same as double integrals. We just add a third dimensions. Actually, it is the total mass of some three-dimensional solid. Actually क्या है? The triple integrals are essentially the same as double integrals. We just add a third dimension. Actually, it is the total mass of some three-dimensional solid. Remark है, the triple integrals are essentially the same as double integrals. We just add a third dimension. Actually, it is the total mass of some three-dimensional solid. Actually, it is the total mass of some three-dimensional solid. Remark, the triple integrals are essentially the same as double integrals. We just add a third dimension. We just add a third dimension. Remark, the triple integrals are essentially the same as double integrals. We just add a third dimension. Okay. Actually, it is the total mass of some three-dimensional solid. Actually, it is the total mass of some three-dimensional solid. Three-dimensional solid. The triple integral are essentially the same as double integrals. We just add a third dimension. Actually, it is the total mass of some three-dimensional solid. Total mass है ट्रिपल इंटीग्रल की फिजिकल इंटरप्रेट. टोटल मास ऑफ सम थ्री-डायमेंशनल सॉलिड. थ्री-डायमेंशनल सॉलिड है, उसका टोटल मास निकल के आता. ठीक. अब इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 1, 0 to t है. क्या है ये? चलो 0 to 1, 0 to x, 0 to 1 plus x plus y, fx y z dx dy dz. Where fx y z equal to I, let I बराबर है इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to x, इंटीग्रल 0 to 1 plus x plus y, fx y z dx dy dz. बराबर है इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to x, इंटीग्रल 0 to 1 plus x plus y dz dy dx is equal to इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to z mod value of z zero to 1 plus x plus y dy dx. Equal इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to x, 1 plus x plus y, 1 plus x plus y dy dx. इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 y है प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2
इंटीग्रल 0 to 1 y plus xy plus y square by 2 0 to x dx. For our integral 0 to 1 put करो y x plus x square plus x square by 2 dx बराबर है इंटीग्रल 0 to 1 x plus 3/2 x square into dx बराबर इंटीग्रल 0 to 1 x plus 3y2 x square into dx is equal to x square by 2 plus x cube by 2 0 to 1 equal to 1 integration 0 to 1 x plus 3y2 x square dx equal to integration x square by 2 plus x cube बटे 2 0 to 1 equal to 1. Evaluate integration 0 to 1 integration 0 to 1 minus x इंटीग्रल 0 to पिछला ही है ये 1 माइनस एक्स माइनस लिमिट्स तो सेम है. कहाँ सेम है बेकार में 0 to 1 ठीक है ये सेम है. 0 to x है वहाँ यहाँ 1 माइनस एक्स है वहाँ 0 to 1 प्लस एक्स प्लस वाई है यहाँ 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स. तो लेट आई बराबर है इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स बाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स is equal to integral 0 to 1 integral 0 to 1 minus x x y z square by 2 0 to 1 minus x minus y dy dz dy dx z का z square by 2 हो गया 0 to 1 minus x minus y dy dx equal to integral 0 to 1 integration 0 to 1 minus x x y बटे 2 1 minus x minus y का होल स्क्वायर dy dz dy dx इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x x y बटे 2 1 minus x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 1 minus x into y dy dx is equal to 0 to 1 integration 0 to 1 minus x x y to 1 minus x का होल स्क्वायर y प्लस y क्यूब माइनस 2 1 minus x into y square dy dx equal integral 0 to 1 x y to 1 minus x का होल स्क्वायर y square by 2 प्लस y की 4/4 माइनस 2 1 minus x y क्यूब बटे 3 0 to 1 minus x dx is equal to integral 0 to 1 x y to 1 minus x की पावर 4/2 प्लस 1 minus x की पावर 4 ये लिमिट्स पुट करी और क्या किया ऐसा dy into dx
0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स एक्स वाई बाई टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई डी वाई इंटू डी एक्स इक्वल इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स एक्स वाई टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस टू 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स जीरो टू 1 एक्स वाई टू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस बाई की 4/4 माइनस टू 1 माइनस एक्स बाई क्यूब बटे 3 0 to 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स बटे 2 1 माइनस एक्स की पावर 4/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस टू 1 माइनस एक्स की पावर 4/3 डी एक्स इंटीग्रल 0 से 1 एक्स वाई टू 1 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 12 डी एक्स एक बटे 24 इंटीग्रल 0 to 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स एक बटे 24 इंटीग्रल 0 to 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स ठीक आ रहा है कि समझ में या मैं वही पहले जेड के रिस्पेक्ट में कर दिया लिमिट्स ले ली फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया सिंप्लीफाई किया बाद फिर लिमिट्स ले ली और लास्ट में यहाँ तक पहुँच गए हम कांस्टेंट बाहर निकाल लिया 0 to 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन करना है ठीक है तो इसमें टेक्निक यूज़ की है 1 माइनस एक्स की है ना जो ये एक्स है नीचे 1 बटे 24 इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स तो 1 बटे 24 इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 4 है खोल ले इसको -1 माइनस एक्स पावर 5 डी एक्स तो 1 बटे 24 1 माइनस एक्स की पावर 5 बटे -5 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 6 बटे 6 0 to 1 बराबर है 1 बटे 24 0 प्लस 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6 1 बटे 24 1 बटे 30 बराबर 1 बटे 720 Therefore इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई जेड डी वाई डी एक्स बराबर है 1 बटे 720 Therefore इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटे 720
तो इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल x plus y plus z dx dy dz over the tetrahedron bounded by planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. Therefore integral 0 to 1, integral 0 to 1 minus x, integral 0 to 1 minus x minus y, x y z dz dy dx इक्वल 1/720. ठीक, इसको इवेल्युएट करना ओवर द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय प्लेन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x plus y plus z equal to 1 that are with the region bounded by the given tetrahedron. Therefore R क्या है, ordered pair x y z such that x plus y plus z less than equal to 1, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0. Here x is less than equal to 1 implies 0 less than equal to x less than equal to 1. So x plus y less than equal to 1 implies y less than equal to 1 minus x. Implies 0 less than equal to y less than equal to 1 minus x. ये रीज़न है, ठीक है. Here x less than equal to 1 implies 0 less than equal to x less than equal to 1. y और z को 0 पुट कर लिया, ठीक है. फिर z को 0 पुट किया, x plus y less than equal to 1 implies y less than equal to 1 minus x. ये y की लिमिटेशंस होगी, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x. Therefore x plus y plus z less than equal to 1 implies z less than equal to 1 minus x minus y implies 0 less than equal to z less than equal to 1 minus x minus y. Let I बराबर है ट्रिपल इंटीग्रल और x plus y plus z dx dy dz. Integral 0 to 1, integral 0 to 1 minus x, integral 0 to 1 minus x minus y, x plus y plus z dz dy dx. 0 to 1, integral 0 to 1 minus x, x plus y plus z का होल स्क्वायर by 2, z equal to 0 to 1 minus x minus y dy dx. Zero to 1 integration 0 to 1 minus x half x plus y plus 1 minus x minus y का होल स्क्वायर minus x plus y का होल स्क्वायर dy dx. बराबर हाफ इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 minus x 1 minus x plus y का होल स्क्वायर dy into dx. हाफ इंटीग्रल 0 to 1 y minus x plus y का क्यूब बटे 3 y equal to 0 to 1 minus x into dx. हाफ इंटीग्रल 0 to 1 y minus x plus y का क्यूब बटे 3 y equal to 0 to 1 minus x dx. बराबर हाफ इंटीग्रल 0 to 1 minus x plus 1 minus x का क्यूब बटे 3
minus 0 plus x cube बटे 3 dx. हाफ इंटीग्रल 0 to 1 minus x minus 1 बटे 3 x cube बटे 3 dx. हाफ 0 to 1 2 बटे 3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बटे 3 dx. हाफ 2 बटे 3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 एक्स की 4 बटे 12 एक्स इक्वल टू 0 to 1 1 बटे 2 2 बटे 3 माइनस हाफ प्लस 1 बटे 12 इक्वल टू 1 बटे 8. तो इस तरह से इवेल्यूएट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू further examples in the next lecture, and you will watch this online lecture on YouTube channel of www.bljscollege.com, and still if there is any difficulty you can contact me. We will meet in the next lecture. Thank you.